अचानक के झटका आवाज़ दिया। Tesum bate mi wapas me ke kicheni बिल्कुल नाम निशाना न भी। उस वक्त 5-6 बज रहे थे। अचानक के ऊपर से बारिश भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही थी। अचानक से ला पाया तो हम इधर से हमारे ये दादिया सारे भाग के, और उधर ऊपर से बारिश सर्दी बहुत सर्दी हो रही थी। हम उधर हमने अपना वो मकान वगैरह के सामान वगैरह शिफ्टिंग से सिटिंग करके दूसरे टेंट में शिफ्ट होने के लिए। जब हम टेंट में थे तो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि हमारी पढ़ाई भी रह गई थी। तकरीबन 1-1.5 महीने हमारी पढ़ाई भी नहीं हो गई, इसलिए वो उधर सर्दी भी बहुत थी, इसलिए हमने गुजारा कर लिया कि सर्दी बर्दाश्त करके। This whole area is exposed to various kind of natural disasters, be it avalanche, debris flow, flash floods, rockfall, landslide, so you just name those. Our primary goal is to create resilient communities and make their life safe so they can see a better future for themselves in this area. बस इसका कि suppose mini risker बस ज़मीनी तो risk लो पर तो वो उसने वो पुरंगो बस बने हुए ज़मीन का पोरत बेत बिकार कोई भी किधर मैच दिया तो समझो वो सुधारने की भी मोनिक सारा दिकार खाल के ज़मीन पुरंद माँ यो बीज यो بدرم زين متاثر وست يا رب سمعش فايدة نه وست نه زمینی تو خیر خوشک وزن پیدا بدم خون گید کو تقریبا 40 سال نسوز آدم خون عالم رتبان دم حالت. Our study shows that in Gilgit-Baltistan and Chitral there are 50 such villages where major part of the village or the community are exposed to various level of hazards. The Aga Khan Agency for Habitat is working with the local communities to come up with a program for the relocation of these high-risk areas. أشياء زميني شخاني كزميني نان زي طغاش مشكلة لكن زاب فيوتشر دستان زرور شوستون قربانيان بردوات أتتمر زرور كي خزمان بفيوتشر دستان زاد ورياشت بتستان شويت خزمان بر هو مستقبل رفاتر وزياشت كوشش سالن. The people of northern Pakistan's high mountain regions have faced emergencies like these one after another for centuries. Lives have been lost, homes destroyed, and communities isolated. And yet people persevere and progress. They live with courage and hope in a place of both stunning beauty and the constant risk of danger. I, Ali Aga Khan, traveled to Pakistan and was honored to be able to hear their stories. Their resilience and bravery have inspired me to help document their reality and share their stories. At the Aga Khan Development Network, we have been working with these communities to build infrastructure, including mitigation walls to protect against rockfalls and landslides, bridges to reconnect isolated communities, and seismic-resistant buildings to protect against earthquakes. We have also built temporary shelters and new homes for families impacted by these natural disasters. The young people I spoke with feel a sense of hope and motivation to overcome these challenges. But these are daunting and we need your help. Learn about this region and these issues. Share this video. Follow us for updates about future events and fundraisers. In a world facing an ever-increasing amount of problems due to climate change, it's time to take action. Let us start here in northern Pakistan.
Hello everyone, I am Ibshar. And I'm Aurangzeb Panjwani. And together, we will be your hosts for today's Global Smiley Civic Day Trivia Quiz. Our theme for today is environmental stewardship, यानी कि इस माहौल की तरफ हमारी जिम्मेदारी। ये दुनिया और इसका माहौल हमारे लिए एक नेमत है और इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और ग्लोबल स्माइली सिविक डे के मुनासिबत से पिछले 2 दिनों में जमाती इंस्टीट्यूशंस ने मल्टीपल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, जैसा कि प्लांटेशन ड्राइव एंड क्लीनलीनेस ड्राइव। इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए एक क्विज लेकर आए हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट क्विज, मैं ज़ेब से एक सवाल पूछना चाहूंगी। ज़ेब, क्या तुम हमारे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जहां तुमने नेचर के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील किया हो? वेल इब्शार, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आई एम श्योर हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी ऐसे बहुत से मोमेंट्स रहे होंगे। बट अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ पे अगर एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करूं और मेरा मोस्ट कनेक्टेड मोमेंट की बात करूं तो वो मेरा केन्या का वाइल्ड लाइफ सफारी का होगा। सो केन्या के वाइल्ड लाइफ सफारी के दौरान मैंने वहाँ पर 4 दिन का स्टे किया, जिस दौरान मैंने अलग अलग तरह के जानवर देखे, जैसा कि ज़ीब्रास, अफ्रीकन बफेलोज, राइनोज, और उनको उनके नेचुरल हैबिटाट में देखा। और उसके साथ साथ हजारों किस्म के दरख्त देखे जो उस इकोलॉजी का पार्ट थे। और नेचर के पास अपने आप को इतना क्लोज देखकर मैंने एक सुकून और इत्मीनान महसूस किया। और साथ साथ मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि हमारी दुनिया कितनी डाइवर्स और साथ साथ खूबसूरत भी है। पर मैं पूरे दौरान मेरी जिस वाइल्ड लाइफ सफारी रही, उस वक्त मैं ये सोचता रहा कि हमारी दुनिया में हर शय की इस दुनिया पर एक इक्वल जिम्मेदारी और हक है और हर शय मिलकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। बिल्कुल सही ज़ेब। मैं जब तुम बात कर रहे थे उस वक्त साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि क्या हम इतने अवेयर भी हैं कि हमें पता हो हम इस दुनिया में क्यों हैं, या एज अशरफुल मखलूक हमारी यहाँ पर क्या जिम्मेदारियां हैं। ज़ेब, मैं ये भी सोच रही थी कि क्या आने वाले 50 या 100 सालों के बाद हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत नजर आएगी? इब्शार, ये सवाल तो बहुत अहम है, बट पर्सनल लेवल पर मैंने इस पर कभी ज़्यादा गौर व फिक्र किया नहीं। मगर आज का हमारा ग्लोबल स्माइली सिविक डे का विद द थीम एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप हमें अवेयर कर रहा है कि एज ह्यूमंस हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल सही ज़ेब, एब्सोल्युटली। ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा एक जिम्मेदार एक्ट आने वाली कई जिंदगियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। और अगर हम ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो हमें कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसमें से कई चैलेंजेस तो ऐसे हैं ज़ेब जिनको हम आज भी अपनी दुनिया में देख सकते हैं। आए कुछ तस्वीरों से हम इनका जायजा लेते हैं। सो अब हमारी स्क्रीन पर हम एक स्लाइड शो देखेंगे जिससे हमें ह्यूमन एक्टिविटीज का मालूम होगा कि हम एनवायरनमेंट के साथ क्या क्या कर रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो हमारे बहुत से ऐसे रोजमर्रा के अमल हैं जिससे इस दुनिया और इसमें रहने वाली मुख्तलिफ स्पीशीज को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। कई दफ़ा तो हमें अंदाज़ा तक नहीं होता कि जो चीज़ें हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट पर कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है। बिल्कुल इब्शार, और आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आज एनवायरनमेंट के साथ हो रहा है, जितनी डिग्रेडेशंस हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं एज ह्यूमंस हम जिम्मेदार हैं। मगर साथ साथ ये होप भी है कि वी एज ह्यूमंस हैव अ चॉइस टू फिक्स दिस ब्रोकन इकोलॉजी, और हम अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हमें एक फ्री विल के साथ पैदा किया है, जिसका मतलब यह है कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम पर एक बहुत भारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिससे हमें ये डिसाइड करना है कि हम कैसी चॉइसेस अपनाएं,
क्या हमारी चॉइसेस ऐसी हों जिससे दुनिया को फायदा हो या नुकसान? इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी कंजम्पशन को कम से कम करना पड़ेगा ताकि हम नेचर के साथ एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। बिल्कुल इब्शार, आई थिंक बैलेंस विद नेचर बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बना सके। और आज का हमारा ग्लोबल स्माइली सिविक डे का ये क्विज हमें अवेयर करेगा कि हमारे माहौल और इसमें होने वाले मसाइल का हल इंसान के पास मौजूद है और हम सब मिलकर इसको बेहतर बना सकते हैं। पर आए एक वीडियो की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथी हमसे क्लाइमेट चेंज पर क्या कहना चाहते हैं। So let's watch this video. Hi everyone, my name is Sarah Dal from Mombasa, Kenya. We have many environmental issues, but today I'm going to be talking about deforestation. What is deforestation? It is the permanent removal of trees to make room for something besides wood. So one environmental issue that affects my community is deforestation. One environmental issue that affects my local community is poor water quality, which is also related to some bigger issues such as pollution and littering. The environmental issue I have chosen is habitat loss. This is something really disastrous as it impacts our entire ecosystem and the food web. The ecological problem of our city is that in our region there are several places of burial of atomic. I want to shed light in this video on the wildfires that happen here in summer seasons in the last 2 years, especially in the western and the northeastern Syria. Water pollution has been a huge environmental issue that is affecting the life of marine creatures. It is caused by the waste of plastic and other material that are dumped into the oceans. The water pollution is one of the most common environmental issues in my community. Due to limited access to natural gas, the usage of wood for daily life purposes is too common. In winter, the rate of usage of wood, especially coal, increases. That leads to deforestation and air pollution. Climate change is a really big issue, and studies have shown that by 2030 we will not be able to reverse the effects of climate change if we do not take action. Just about 6.2% of Kenya's total land is currently covered with forest since humans started cutting down trees. One of its major impacts on our community is that air is being depleted at a rate of 26 million hectares per year. During the Soviet era, they fought this problem by planting a lot of trees. At the moment, a Hajj park that protects from uranium was cut down to give in for commercial activities. I hope that we can find quick solution to protect vegetation. If this is not taken care of, it can destroy the habitat and life of the marine creatures and other animals who rely on them. Climate change has affected my community as the temperature has been going from one extreme to the other, which has affected the production of vegetation, which has in turn increased the cost of living. If not today, then when? I repeat to myself, if not today, then when? Thank you. I'm moved after watching this video. These thoughts and fears shared by our friends are the stories of real people around us. अगर हम अपनी दुनिया को देखें तो बहुत सारे मसाइल हैं जो हम देख सकते हैं, जैसा कि अगर हम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो वो हर साल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, या हम अगर देखें तो बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जो वाइल्ड फायर्स का शिकार हैं, एंड दिस इज हैपनिंग अराउंड अस टुडे। बिल्कुल ज़ेब, और ऐसे कई और मसाइल हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं जो हमें मज़ीद प्रिपेयर करेगी हमारे आज के कहूट क्विज के लिए। बिल्कुल इब्शार, सो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा कहूट क्विज जल्द ही स्टार्ट होगा, पर इस कहूट क्विज से पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ताकि हम उस कहूट क्विज में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि इस वीडियो को जो हम देखने जा रहे हैं इसमें बहुत से इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी जिससे जो क्वेश्चंस हैं, जो कहूट क्विज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसका पार्ट है, उसको हम जवाब दे सकेंगे। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर टुडेज कहूट क्विज। How do we create a future in which both people and nature can thrive? This is the biggest question of our times. In the next few decades, we need to do something unprecedented, achieve a sustainable existence on Earth. But how do we do it?
We can start by understanding how we got to this point. 20,000 years ago, humankind consisted of less than 1 million hunter-gatherers across the globe. We lived within the resources on offer on Earth. There's very little wild left. This biodiversity loss is not just a tragedy, it's the single biggest problem we face. Without biodiversity, the world as we know it doesn't work. Our planet needs its wild spaces. Every one is a component in the global machine. Only if they are all healthy can the planet run smoothly. A less wild world is less stability, and stability is what we need most of all. Can we turn this situation around? Can we re-wild the world? Well, maybe, due to one key change. As societies develop, something is happening that has never happened before. People are having fewer children. Globally, since the year 2000, the number of people under 16 years old has hardly changed. The main reason our population is still rising is because people are living longer. If this continues, our population may finally stop growing by the turn of the century. By investing in education and women's rights and raising people out of poverty, we could bring about peak human even sooner. This changes everything. It gives us the opportunity we need to regain our balance. The plan for our planet is remarkably simple. Reduce our impact by making sure that everything we do, we can do forever. For the biggest gains, we could concentrate our efforts on 4 goals: phasing out fossil fuels and replacing them with renewables. This will not only slow the warming of the planet and the acidification of the ocean, but it will lead to clean air for all of us. Upgrading to efficient food production and reducing our consumption of meat. We'll require far less space to provide for ourselves, leaving more for grasslands, reducing deforestation and our demand for fresh water, and feeding more people with healthier, more affordable food. Working together to properly manage our ocean. A global network working hard to keep hold of the wild populations we still have, encouraging nature wherever we can. In the ocean, on land we no longer need, and even in our cities. If we make these changes, we'll be a long way to becoming a species in balance with nature once again. We will have taken a remarkable journey. From 1 million people struggling to survive, to several billion living long, healthy lives on a stable planet, able to provide for all our needs. Only at that point will the Anthropocene, the age of humans, be truly underway. At that point, we will be proud to call it our planet. How do we create a future in which both people and nature can thrive? We open our eyes to this moment in history. Think on a planetary scale. Embrace the challenge we face. And do something we humans are very good at. Change the world. जैसे कि हमने वीडियो में देखा, जो करंट रियलिटी है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन हमारे पास अब भी मौका है कि हम अपनी चॉइसेस को बेहतर बना सकते हैं.
And on that thought, let's move to the next segment of our show today, जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है, to our Kahoot show. Yes, finally, so हम अपना Kahoot क्विज बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे एंड आई एम श्योर दोस्तों कि जो वीडियो हमने अभी देखी उससे हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, बट अब वक्त आएगा जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को टेस्ट करेंगे. बट Kahoot खेलना कैसे है इसके ऊपर देख लेते हैं, ताकि मैं आपके साथ इंस्ट्रक्शंस शेयर करता चलूं और आप लोग को सबको आइडिया हो कि हमें आज आप किस तरीके से Kahoot पर ज्वाइन करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस आपकी स्क्रीन पर शेयर किए जाएंगे. सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस दैट यू वांट टू यूज फॉर द Kahoot क्विज टुडे, अगर आप अपने मोबाइल फोन्स पर हैं या टैबलेट्स पर हैं, सो आपको एप्पल स्टोर पर या प्ले स्टोर पर जाना होगा और Kahoot की ऐप को डाउनलोड करना होगा. अगर आप आज का क्विज Kahoot क्विज कंप्यूटर से खेलना चाहते हैं या लैपटॉप से खेलना चाहते हैं, सो आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर पर जाकर www.kahoot.com को इंसर्ट करके उस वेबसाइट को ओपन करना होगा. नाउ सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी डिवाइस से आप एक्सेस करना चाहते हैं, सो अगर आप अपने मोबाइल फोन से या टैबलेट से यूज करें, सो जब आप Kahoot की ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बॉटम पर जो आपके सामने इंटरफेस होगा, होम पेज होगा, उसके बॉटम पर आपके पास इंसर्ट पिन का ऑप्शन होगा. आपको वहाँ इंसर्ट पिन पर जाना है और आपको हमारे Kahoot की जो पिन है आज की उसको शेयर करना होगा. सो और फिर आप वहां पर अपनी पिन एंटर करोगे. बट अगर आप वेबसाइट से लॉग इन हैं, तो आपको वेबसाइट पर ऊपर टॉप मोस्ट पर जाना होगा और वहां पर प्ले के ऑप्शन पर जाना होगा, जहां पर अपनी आप पिन को इंसर्ट करेंगे. हम आपके साथ जो पिन है वो चैट पर शेयर कर रहे हैं और चैट पर जाकर आपको आपकी पिन जो है वहां पर मिल जाएगी. जैसे ही आप अपनी पिन इंसर्ट करेंगे, सो इंसर्ट करने के बाद आप जैसे ही Kahoot क्विज को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको निकनेम की रिक्वायरमेंट मांगेगा. आज की जो हमारी नेमिंग कन्वेंशन हम जो यूज करें वो है हमारा फर्स्ट नेम एंड देन आवर सिटी, विच मीन्स कि अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं खेलना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना नाम ज़ेब एंड देन अपनी सिटी कराची लिखूंगा. सो इस तरीके से हम जो हैं इस Kahoot क्विज को ज्वाइन कर सकेंगे. क्वेश्चंस एंड आंसर्स कैसे देने, वो इस तरह से होगा कि जैसे ही आपने जिस प्लेटफॉर्म से हमें ज्वाइन किया, अगर आपने हमें जूम से ज्वाइन किया है, सो जूम की स्क्रीन पर यानी आपके होस्ट की स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ रहे होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने 5 to 10 सेकेंड्स तक नजर आएगा. और वो क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे एक देख सकते हैं, जैसे व्हाट इज 2 + 9, सो ये क्वेश्चन होगा. अब इसके जो आंसर्स होंगे वो उसके आपके सामने होस्ट की स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट कलर्स में मौजूद होंगे. जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऑप्शन रेड इज 23, ऑप्शन ब्लू इज 19 एंड ऑप्शन 3 इज 11 एंड ऑप्शन डी इज 8 और ऑप्शन ग्रीन इज 8. सो डिपेंडिंग ऑन द आंसर जो आपको लगता है कि आंसर करेक्ट है, आपको वो कलर को चूज करना होगा और अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी डिवाइसेस की स्क्रीन के ऊपर उसको सेलेक्ट करना होगा. सो जिस डिवाइस से आप खेल रहे हैं आपके सामने 4 कलर्स होंगे और आपको हमारी स्क्रीन से देखकर गैस करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है और उस कलर को अपनी डिवाइसेस पर सेलेक्ट करना है. कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले क्वेश्चन अपीयर होगा, आपने क्वेश्चन रीड करना है. उसके साथ साथ आपके पास टोटल 1 मिनट का टाइम होगा जिसमें आपने उस क्वेश्चन को आंसर भी करना है. साथ ही साथ मैं ये बताती चलूं कि हमारे पास टोटल गेम के क्वेश्चंस 20 हैं और एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसको हम अभी कुछ देर में प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ. उस टेस्ट क्वेश्चन के कोई मार्क्स नहीं है, बट जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस हैं गेम के अंदर, दे आर मार्क्ड. Each question is marked for 1000 points. आप जो भी जवाब देंगे उसको out of 1000 आपको मार्क्स मिलेंगे. एक और चीज ये भी है, याद रखिएगा कि जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. और मैं आपको ये बताता चलूं, एट द एंड ऑफ द क्विज जो हमारे विनर्स होंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, उनके लिए हमने बहुत सारी एक्साइटिंग प्राइजेस रखी हैं जो उनको अवार्ड की जाएंगी. सो मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट शॉट. अब हम अपना इंतजार करेंगे कि Kahoot पर हमारे जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ आज खेलना चाह रहे हैं वो ज्वाइन करें. सो जो पिन आपके साथ शेयर कर दी गई है चैट के ऊपर, वो पिन पर आपको जाकर उससे आपको एक्सेस करना होगा. Okay, we are waiting for everybody to join Kahoot ताकि हम अपनी गेम का आगाज कर सकें. हमारी आज की पिन में एक दफा दोबारा दोहरा रही हूँ, इट इज 2409425. 2409425. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जल्दी कर लें. आई कैन सी
180 participants have joined us. हालांकि हमारे पास कॉल पर above Zoom पर हमारे पास इस वक्त above 500 participants हैं. So we will still wait for a while ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग join कर सकें. बिल्कुल, और साथ ही साथ आपको दोस्तों मेक श्योर करना है कि जो नेमिंग कन्वेंशन आपको बताई गई है विच इज़ आवर फर्स्ट नेम एंड देन आवर सिटी, सो आप उसी तरह से ज्वाइन करो. ये हमें इसलिए भी हेल्प करेगी क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्विज हम आपको ट्रैक कर सकेंगे कि हमारे विनर्स कौन सी सिटीज से हैं, ताकि हम आपके पास आपकी जो अवार्ड्स हों या प्राइजेस हों वो आप तक पहुंचा सके. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो कहूट को ज्वाइन करें वो अपने फर्स्ट नेम विद योर सिटी करें. इन केस आपने कोई और नाम से ज्वाइन किया है, सो for now हम आपको कहूट से रिमूव करेंगे, बट देन यू कैन ज्वाइन बैक विद द करेक्ट नेमिंग कन्वेंशन. आई एम श्योर आप सब बहुत एक्साइटेड हैं. हम बहुत जल्द अपना कहूट क्विज स्टार्ट करने वाले हैं. बस कुछ और सेकेंड्स या एक और मिनट हम वेट करेंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लें. जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन टफ होता जाएगा. So definitely Ifshar, or I think we've crossed 200 already, which means कि हम 250 तक जल्दी पहुंचने वाले हैं. And then जितने ज़्यादा लोग होंगे I'm sure, जैसे इफ्शार ने कहा, हम उतना इस कहूट क्विज को आज के enjoy करेंगे और साथ साथ बहुत से information and learnings लेकर जा रहे होंगे. बिल्कुल, हमारा क्विज सिर्फ गेम के मकसद के लिए नहीं है. हम आज के सेशन से या आज का जो हमारा शो है उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीख कर जाएंगे जो आज से पहले हमें नहीं पता थी, अपनी दुनिया के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में. So I hope you guys are excited. We are excited. We are excited. Definitely, we are excited. And हम आपके साथ प्ले करने के लिए भी बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज ये पूरी जर्नी होगी जो 20 क्वेश्चंस की जर्नी होगी. आई एम श्योर कुछ लोग ऊपर जा रहे होंगे, कुछ लोग नीचे आ रहे होंगे, कुछ लोग वापस चेस करके वापस ऊपर आ रहे होंगे. सो डेफिनेटली हम सब एंजॉय करने वाले हैं. And 20 questions are a lot. I mean 20 questions में आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर आप पीछे हो गए हैं for any reason, तो आप दोबारा से आंसर करके बीच में भी आगे बढ़ सकते हैं. Definitely. I can see we have 284 participants already on Kahoot. हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, just चंद और seconds. Yes, so we're close to 300, and I'm sure जितने लोग हमारे साथ इस वक्त एटलीस्ट Zoom पर ज्वाइन है वो सब तो हमें ज्वाइन करेंगे, which means कि हम 500 तो मिनिमम जा ही रहे हैं, और I'm sure उसको भी ज़्यादा क्रॉस कर सकते. So we can set the milestone and we can set this target कि हम 500 and maybe beyond जा रहे होंगे. So yes. We have around 318 participants on Kahoot. बिल्कुल. ये बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है ज़ेब. I'm sure होगा, और हम सब इसको एंजॉय भी करने वाले हैं, इस पूरे प्रोसेस को. I'm sure आप लोगों ने जो वीडियो हमने इससे पहले दिखाई उसको गौर से देखा होगा, क्योंकि हमारे Kahoot क्विज के अंदर बहुत सारे सवालात उस वीडियो के अंदर से हैं. तो जिन ने वो वीडियो गौर से देखी थी वो ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे हमारा क्विज. बिल्कुल. So, मैं पिन आपके साथ रिपीट करता चलूँ. हमारी जो पिन है वो है 2409425. यानी कि आप अगर अपने फोन्स या टैबलेट्स हैं तो ऐप को इंस्टॉल करना है, कहूट की ऐप को, एंड देन ये पिन एंटर करनी है. या अगर आप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स पे हैं तो अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाकर या ब्राउजर पर जाकर कहूट की वेबसाइट पर प्ले के ऑप्शन पर ये पिन एंटर करनी होगी, विच इज 2409425. And I think on that note we have quite a few participants on Kahoot और हम अपना Kahoot quiz start करने वाले हैं. Let's begin with the test question. So I think हम आगे जानेंगे, बट मुझे लगता है कि शायद मेरी एक्सपेक्टेशन है इफ्शार कि और आने वाले हैं. So 350 हम पहुंच चुके हैं, बट मुझे लगता है कि शायद हम एटलीस्ट 500 के ऊपर तो जाना चाहिए. We have crossed 350. Yes. And I'm sure ये मोमेंट जो बेसब्री है या ये हम एक्साइटमेंट है, I'm sure हमें चाहिए कि हम जल्दी से Kahoot स्टार्ट करें, बट I'm sure जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे उतना ज्यादा हम एंजॉय भी करने वाले हैं. Definitely. अगर आप अब भी ज्वाइन कर रहे हैं so please I repeat, pin is 2409425. 240, I repeat, 9425. Whoever is joining now, please आप इस पिन को डालें और Kahoot, हमारा आज का Kahoot गेम क्विज ज्वाइन करें. और मैं कितनी डाइवर्सिटी देख रहा हूँ इफ्शार इस वक्त स्क्रीन पे. हमारे पास गिलगित से फ्रेंड्स हैं, कराची से फ्रेंड्स हैं, और अलग अलग यूएई से, which means we're going international today. That's amazing. That's amazing. I can see a lot of participants जिन्होंने अपना सिटी मेंशन नहीं किया हुआ है. Let's see, अगर आप में से कोई जीत जाता है तो फिर हमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी towards the end of the quiz.
Yes, and it's ideal and we request you all कि आप जब ज्वाइन करें तो अपना फर्स्ट नेम विथ योर सिटी एंटर करें ताकि हम ट्रैक कर सकें कि हमारे पार्टिसिपेंट्स इनफैक्ट जो विनर्स हों वो कौन सी सिटी से या कंट्री से हैं ताकि हम जो प्राइजेस हैं वो आप तक पहुंचा सकें. बिल्कुल. Zabe, do you see the number? It has crossed 400. Yes, we are on 405. Which means कि मेरी प्रेडिक्शन सही थी, हम पहुंच सकते हैं उस लेवल तक. बिल्कुल. I think कुछ और सेकंड्स हम वेट करेंगे. Yes. And I'm sure ये जो वेटिंग टाइम है ना ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. लाइक जब भी कोई रेस स्टार्ट होती है या कोई भी चैंपियनशिप है, ओलंपिक स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले का जो वेटिंग टाइम है, आई एम श्योर वो जो जिसमें हम मेहनत कर रहे होते हैं, अब गेम प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे जीतना है. सो आई थिंक ये सारी फीलिंग्स चल रही होंगी पार्टिसिपेंट्स में कि आज का कहूट क्विज जीतना कैसे है. बिल्कुल. ऑलराइट, ये एक ऐसा टाइम है जहां लोग एंग्शियस भी हैं बट उसके साथ साथ दे आर एक्साइटेड एंड दे वांट टू प्ले द क्विज, दे वांट टू विन द क्विज. एंड आई एम श्योर वी विल हैव 3 पार्टिसिपेंट्स जिनको हमारे अमेजिंग आज के जो प्राइसेस हैं वो मिलेंगे. देखते हैं कौन है वो पार्टिसिपेंट्स जो आज हमारे साथ जीतेंगे और वो प्राइजेस लेकर जाएंगे. Yes, and our count is 433 right now, which means that we are increasing our Kahoot family right now. The participants family is increasing. Amazing. Again मैं रिपीट कर रही हूँ, पिन जो है आपकी स्क्रीन पर वैसे भी नजर आ रही होगी चैट पर. एंड इफ यू हैव जस्ट जॉइंड 2409425 इज द पिन टुडे. आपने अपने नाम, फर्स्ट नेम एंड योर सिटी के साथ ज्वाइन करना है क्विज. बिल्कुल. ऑलराइट, क्या लगता है ज़ेब? 500. ओके. मेरी प्रेडिक्शन है, मतलब मैं उसी पे maybe I'm over ambitious but I'm sure that participants can prove me right here. No, definitely, I agree with you. We are at 453 participants already. और बहुत जल्द मुझे लगता है हम 500 participants तक पहुंच जाएंगे. Inshallah. 500 participants means a very tough competition. Yes, definitely. Just imagine अगर हम ये physical quiz कर रहे होते, so एक रूम में 500 लोग साथ में होते और हम उनके साथ कर रहे होते, right? So I think वो कितना amazing होता. But I'm sure कि जब Kahoot के साथ करें तो ये भी ऐसा ही इतना ही exciting होगा with all the visuals, questions and answers in mind. All right, I think we are at 461. Zeb, I think we should start, yes, right? हम start कर सकते हैं. एक और चीज है, अगर हमने start कर भी दिया होगा, जिन्होंने अभी तक join नहीं किया वो उस पिन के साथ हमें journey में join कर सकें. So let's say जैसे ही quiz start हो जाता है but you feel कि नहीं आप disconnect हो गए, वापस join करना है या आपने join नहीं किया था तो आपके सामने पिन स्क्रीन पर होगी और आप हमें join कर सकते हैं इस journey में. बिल्कुल. चलें, let's begin with the quiz. Let's begin, Ifshar. Let's start. So हम अपने टेस्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. आई रिकॉल ये हमारा टेस्ट क्वेश्चन है, which means कि इसके कोई पॉइंट्स नहीं होंगे, बट हम ये क्वेश्चन को सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए करें ताकि हमें पता चल सके कि हम खेलेंगे कैसे. So let's start our quiz now and our test question is going to be on screen now. 3, 2, and 1. Here we go. So the first test question or the test question is, which day are we celebrating today? Option red is Global Smiley Civic Day. Option blue is Environmental Day. Option yellow is Global Earth Day. And option green is Peace Day. So जो आपको लगता है करेक्ट आंसर है, आप उस कलर को अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस भी डिवाइस से आप खेल रहे हैं उस पर आप सेलेक्ट करेंगे. आई कैन सी के 300 पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है, which means कि हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं वो बड़े ही एक्टिव हैं. I'm sure they're ready to dive in and play this Kahoot quiz. We still have 25 seconds remaining and more students are participants are answering. बिल्कुल. Amazing. So the correct answer is today we are celebrating Global Smiley Civic Day. So दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन रेड है, बट कुछ हमारे साथी थे जिन्होंने अब तक नहीं करेक्ट आंसर दिया था, बट आई एम श्योर इस क्वेश्चन के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन याद रहेगी कि आज हम ग्लोबल स्माइली सिविक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बिल्कुल. स्कोरबोर्ड की तरफ चलते हैं. चूंकि हमारा टेस्ट क्वेश्चन था, 0 स्कोर है, किसी को स्कोर नहीं मिला. बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, योर क्विज इज स्टार्टिंग एंड फॉर ईच क्वेश्चन नाउ यू विल बी गिवन पॉइंट्स. सो प्लीज प्ले माइंडफुली. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
According to the video, what is the main problem our planet is facing today? Red, we are recycling enough plastic. Blue, our planet has become less wild. Yellow, few ice caps are melting. And green, we are planting the wrong type of trees. अगर आपने वीडियो गौर से देखी है, so I'm sure you can answer this question. चूंकि ये पहला सवाल है, हमने काफी easy options रखे हैं. आगे जाते जाएंगे, सवालात मुश्किल होते जाएंगे. Be mindful. 350 participants have already answered. We still have 28 seconds. Amazing energy, guys. Amazing energy. All right. I think we still have people answering. We will wait for the whole 1 minute. Yes. And जितना आप जल्दी जवाब दे रहे हैं उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, which means कि आंसर की करेक्टनेस एंड उसकी स्पीड भी मैटर करती है. तो जितनी स्पीड से आप देंगे सो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. बिल्कुल. एंड हम देख सकते हैं कि 286 पार्टिसिपेंट्स ने सही जवाब दिया, which is our planet has become less wild. कुछ लोगों ने गलत भी दिया है, but it's okay. थोड़ी सी इस पे बात करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. प्लैनेट हैज बिकम लेस वाइल्ड से मुराद ये है कि हमारे प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी बहुत हद तक इम्पैक्ट हो चुकी है. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे नेचर से कोई एक भी कंपोनेंट कम हो जाता है या मिस हो जाता है, इसका इम्पैक्ट तमाम क्रीचर्स पर आएगा. इवन ह्यूमंस इवेंचुअली विल फेस द इम्पैक्ट, क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं. एंड ऑन दैट थॉट, लेट्स सी द स्कोरबोर्ड. देखते हैं कौन हमारे पास टॉप पर है इस वक्त. So we have Ahla Kareem from Karachi. No, sorry, she's on second. We have Khalil with 981 points. Excellent, Khalil. Khalil is on top. And then we have Ahla on second. And then we have Ishal Kareem on the third with 974 points. So हमारे पास जो शुरू के 5-6 participants हैं टॉप पर, वो सारे 900s की रेंज में, which means कि बहुत टफ कंपटीशन रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में. चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ. All right, next question is, according to the video, the plan for saving our planet should be option red, use all the resources we have right now. Option blue, develop technology to safely travel to Mars. Option yellow, achieve sustainable existence on Earth. Option green is developing technologies for fossil fuels. I think जिस वक्त तक मैं स्पीड में क्वेश्चन पढ़ रहा था, पार्टिसिपेंट्स तो जवाब भी दे रहे थे, which means के काफी प्रिपेयर्ड हैं हम आज के कहोट को इसके लिए. Which means के वीडियो भी बहुत गौर से देखी है लोगों ने. Definitely 400 क्रॉस कर चुके हैं, which means कि हमने 30 सेकंड्स तक ऑलमोस्ट 70-60% पार्टिसिपेंट्स ने जवाब भी दे दिया था. बिल्कुल आधी मिनट के अंदर. Amazing energy, guys. Almost all students have answered already. Yes, definitely. मेरा प्रोफेशन आई थिंक मेरे आड़े आ रहा है. आई कीप ऑन सेइंग स्टूडेंट्स बिकॉज आई एम अ टीचर, बट yes. Amazing. So the correct answer is option yellow, which means जिन्होंने ज्यादातर जवाब भी सही दिया है, achieve sustainable existence on Earth. अगर हम अपने लाइफस्टाइल को देखें जो आज हम कर रहे हैं, हाँ ओवर कंजम्पशन हो रहा है, इस हिसाब से शायद हमारा नेचर की रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट कर जाएंगी. सो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, और ये जरूरी भी है. इट्स गोइंग टू हैपन ईदर बाय डिजास्टर और बाय डिजाइन. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इसको डिजाइन के साथ चेंज करें ताकि हम उस डिजास्टर को अवॉइड कर सकें, और ये बहुत ही जरूरी है. ऑलराइट, लेट्स सी आवर स्कोरबोर्ड. All right, tables have turned. अब हम देखते हैं कि जो टॉप पर हमारे पास मौजूद है वो है सबरीना खान. Congratulations with 1955 points. And then second we have Alicia from UAE. And then Maryam from Karachi. So competition is tough, guys, and I'm sure ये पूरी जर्नी में numbers ऊपर नीचे होते रहेंगे, names ऊपर नीचे होते रहेंगे, but I'm sure कि competition इतना ही close और amazing रहेगा. All right, next question की तरफ चलते हैं. According to the video, what is this new era of our planet's history called? Red, the Cretaceous period. Blue, Homo sapien. Yellow, the Anthropocene. And green, the 21st century. Alright, फौरन जवाब आ रहे हैं. ज़ेब बहुत ही स्पीड से जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स खेल रहे हैं. We have 370, 380 participants.
ऑलरेडी आंसर्ड, अभी आधा मिनट भी नहीं हुआ है। That's amazing. और दोस्तों जो अब तक हमारे साथ ज्वाइन जिन्होंने नहीं किया, अभी भी आपके पास मौका है कि आप कहूट की ऐप पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारी पिन है आज की वो है 2409425। ये पिन आपको चैट पर भी मौजूद मिलेगी, आप वहां पर भी जाके पिन को देख सकते हैं और हमें कहूट पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए। All right, a lot of you have answered green, and then third पे हमारे पास सही जवाब है with 191 participants जिन्होंने कहा है the Anthropocene. Yes, this new age scientists call it Anthropocene. और Anthropocene का meaning क्या है? It's a Greek word. Anthropo means man and scene means new. So the new man. New man क्यों कहा जा रहा है आज की दौर को? Probably because आज इंसान जो चीजें कर रहा है वो आज से पहले के इंसान ने ना कभी सोची थी और ना कभी की थी। आज हम दुनिया को और नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। That's why it's the age of humans. बिल्कुल इब्शार, और आई थिंक देखा जाए तो ये क्वेश्चन वीडियो से था, इसलिए हम कह रहे हैं कि yes we are in 21st century but according to the video हम किस पीरियड में है हिस्ट्री के, and this is why it's the answer is Anthropocene which is correct. Exactly. Scientifically इस एरा को Anthropocene कहा जाता है। चलते हैं स्कोरबोर्ड की तरफ और देखते हैं कि कौन आगे बढ़ गया है। क्या do we still have the same winners or so Alicia second पे थी, I think now she's on top with 2,924 points. Mariam was on third or fourth, maybe she's on second now, and Sabrina was on top, whom I can't see her in top fives anymore. So very good Alicia and Mariam, Rehana, keep it up. चलते हैं next question की तरफ। बिल्कुल। All right, our next question is, according to the video, what is the common assumption about this planet Earth? According to the video, option red is resources are balanced and would last forever. Option blue, we humans will outlive all the creations on this planet. Option yellow, this world will eventually end. Or option green, all of the above. All right, according to the video, क्या assumption है हमारी common about our planet Earth? हम वेट करेंगे पूरे मिनट का ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आंसर दे सकें, एंड इवेंचुअली अगर सारे पार्टिसिपेंट्स ने दे दिया तो टाइमर खुद भी एंड हो जाएगा। So we will give you the whole minute to answer. All right, so the correct answer is, which is our common assumption about our planet Earth, which is that resources are balanced and would last forever. दोस्तों ये शायद हमारी कॉमन अजम्पशन रही है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है, यानी दुनिया में लोगों की तादाद, इंसानों की तादाद बढ़ रही है, हमारी अजम्पशन ये रही है कि हमारी रिसोर्सेज भी बढ़ रही है, बट ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से हम रिसोर्सेज यूज करें वो एक वक्त आएगा कि एग्जॉस्ट हो जाएंगी और शायद हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगी, इसलिए हमें सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है। चलते हैं स्कोरबोर्ड की तरफ और देखते हैं कि कौन इस क्वेश्चन के बाद टॉप पर है। Aisha is back in the race, and we can see she is on the top with 3825 points. And then second we have Ali Salman, who's again from Karachi, and then Ahla Kareem from Karachi, and then Armeen and Anam. So good job guys, and I'm sure बाकी लोग जो इस सवाल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए but बाकी questions में और अच्छा परफॉर्म करेंगे। So with this in mind, let's go to our next question. According to the video, how are we treating our planet Earth today? Red, we have killed most plants and animals. Blue, we have explored oceans and faraway islands. Yellow, we have never used the resources of this planet. And green, we have altered the planet's balance in the process of finding solutions. देखते हैं इसका क्या सही जवाब है। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस थोड़े थोड़े टफ होते जा रहे हैं। This one is not easy, I agree. लेकिन अगर वीडियो गौर से देखी है तो फिर डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। बिल्कुल।
तो कहीं ना कहीं इब्शार ऐसा होता है ना कि हम इस रेस में होते हैं कि करेक्ट आंसर की जगह हम जल्दी जवाब देना चाहते हैं, और ये एक काइंड ऑफ कॉमन वो प्रैक्टिस होती है. सो पार्टिसिपेंट से मैं कहूँगा कि मेक श्योर कि विद स्पीड योर एक्यूरेसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो आप मेक श्योर करना कि आप आंसर जो सिलेक्ट कर रहे हो वो सही आंसर कर रहे हो. आई थिंक कहूट का सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ये है कि आपने सही भी जवाब देना है और जल्दी भी देना है. एग्जैक्टली. Okay, and our time is up. The correct answer, we had two correct answer for this question. जिन्होंने red click किया है वो भी ठीक है और जिन्होंने green click किया है वो भी ठीक है. So we have killed most plants and animals, and we have altered the the planet's balance in the process of finding solutions. जैसे कि ज़ेब ने थोड़ी देर पहले हमारे साथ डिस्कस किया कि हमने अपने कंफर्ट और अपनी ईज के लिए इस प्लैनेट के बहुत से रिसोर्सेज को इस हद तक यूज कर लिया है कि वो मिसयूज होते जा रहे हैं अब. ठीक है, और वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है जब हमारे प्लैनेट के जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो एग्जॉस्ट होने लग जाएंगे. वी नीड टू बी मोर कॉन्शियस, मोर कॉशियस टुवर्ड्स आवर लिविंग पैटर्न्स. देखते हैं स्कोर बोर्ड, देखते हैं कौन आगे बढ़ा है. Aisha is still on top, amazing, with 5,599 points. Second is Ahla, she is also on top. Alisha from Sharjah is back. Ali Salman, good job. मैं देख रही हूँ ज़ेब, जो लोग टॉप पे थे वो मैनेज कर रहे हैं टॉप पे ही रहना. I mean they're trying their best कि वो नीचे ना हो. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बिल्कुल. All right, our next question is, according to the video, why biodiversity is important for the Earth's survival? Option red, because all species would extinct one day. Option blue, because all species survive on one another. Option yellow, because less wild means less able to provide for our needs. And option green is none of the above. So based on your understanding, जो information आपने वीडियो से ली, आपको क्या लगता है कि बायोडाइवर्सिटी हमारी दुनिया के लिए क्यों जरूरी है? जो ऑप्शन आपको लगता है सही है, उस ऑप्शन के कलर को आपको अपनी डिवाइसेस पर सेलेक्ट करना होगा. मैं एक और दफ़ा दोहरा लूँ कि हमारी आज की पिन है 2409425. अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, प्लीज इस पिन को अप्लाई करें और कहूट गेम ज्वाइन करें. वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिमेनिंग, तो आप अभी भी दोबारा आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, अगर आप जल्दी जल्दी जवाब दे दें. 2409425 इज द पिन. डेफिनेटली. ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन के भी दो आंसर्स करेक्ट थे. पहला आंसर जो ऑप्शन ब्लू है, which is because all species survive on one another, and option yellow is because less wild means less able to provide for our needs, which means कि काफी लोगों ने सही आंसर दिया. और अगर हम बात करते चले, जैसे इफ्शार ने कहा कि we all are interconnected, interdependent, और कहीं ना कहीं एक स्पीशी भी एक्सटिंक्ट होती है, सो बैलेंस जो है वह आउट हो जाएगा और कहीं ना कहीं पूरा इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर आएगा. सो इसलिए हमें इम्पोर्टेंट है कि हमें ख्याल रखना है. आई थिंक ये मैसेज जो है वो हमें सबसे ज्यादा लायन किंग में मिलता है, मूवी के अंदर, जहाँ पे वो सर्कल ऑफ लाइफ की बात करते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट स्पीशीज दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड चेन. सो आई थिंक ये जो मैसेज हमें इस वीडियो में या इस मूवी में लायन किंग में बहुत अच्छे से मिलता है. सो विद दिस लेट्स गो टू आवर स्कोर बोर्ड. All right, so we have a new person in the race now. Hasnan is on the top. Congratulations, Hasnan, with 6,431 points. And then we have Ali Salman with consistency, 6,419. Then Insia from Karachi. Amazing. So thank you so much, guys, for doing your best. And I'm sure आप लोग इसी consistency से रहेंगे. और बाकी जो हमारे हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर नहीं है, वो इनको चैलेंज करेंगे और वो अपनी पोजीशन सिक्योर करेंगे टॉप 5 में. So let's go to our next question. According to the video, in the last 50 years, the wild population has red increased by 25%, blue stayed the same, yellow decreased by 90%, and green decreased by 60%. The options are more or less, I mean, not the same, लेकिन काफी close हैं, confusing है. तो हो सकता है इसमें हमारे पास गलत आंसर के चांसेस ज्यादा हैं. सो केयरफुली याद करें. So make sure कि नंबर सेलेक्ट जो करें आप वो सही से करें, माइंडफुली करें.
बट डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। अगर एक सवाल से अगर आपको लगता है कि शायद आपका क्विज एंड हो जाएगा या क्विज में आप विन नहीं कर चुके, नो, बिकॉज वी हैव 20 क्वेश्चंस। सो अगर एक हो भी जाता है, यू कैन स्टिल वर्क ऑन द रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड मेक योरसेल्फ अप इन द टॉप 5। अभी हम 8th क्वेश्चन पे, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर। जी हमारा टाइम अप होने वाला है एंड लेट्स सी द करेक्ट आंसर। डिक्रीज्ड बाय 60%। ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया। 289 participants have given the right answer. Yes, it is decreased by 60%, which is a big number. It is more than 50%. इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने जो आई थिंक वी डोंट इवन रियलाइज कि जब एक स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाता है, they can never come back and we are losing our species like that. ठीक है, so it's high time we put some thought to it. हम इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें और अपने एक्शंस को सही करें। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कौन आगे बढ़ा है। Hasnan is still on the top. Very good, Hasnan, with 7,396 points. Ali Salman is still on the top. Rehana, Insia, Shagufta, all of these people are managing to stay on top. Very good. Good Amazing, job. guys. Good Yeah. job. चलते हैं next question की तरफ। बिल्कुल। So our next question is, according to the video, how can we create a future in which both people and nature can live in balance? Option red, preserve wild population. Option blue, reduce fossil fuel consumption. Option yellow, manage oceans properly. And option green, all of the above. किस तरीके से हम अपनी दुनिया में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं विद नेचर? एंड जो आपको लगता है ऑप्शन करेक्ट है, आप उस कलर को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है सारे ही सही हैं तो आप ऑप्शन ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कोई एक पर्टिकुलर ठीक है तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। 30 seconds are left. आई थिंक इसके साथ कुछ ही और सवालात हमारे पास बाकी हैं जो वीडियो से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की तरफ आ रहे होंगे, जिसमें हमें आपकी जनरल नॉलेज कितनी है इसका अंदाजा होगा। बिल्कुल, सो आई एम श्योर के टेबल्स टर्न हो सकते हैं। डेफिनेटली। वी हैव 5 seconds remaining and the time is up. All right, the correct answer is all of the above and congratulations, maximum people ने इसको सेलेक्ट किया, विच इज़ ट्रू कि अब जिस हिसाब से हमारी दुनिया में अब हालात हो रहे हैं या जो माशरे में हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में चैलेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, आई थिंक उसको हल करने के लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी होगी, बिकॉज वन फिट ऑल अप्रोच शायद हमारे लिए काम ना आए। और उसके एक एग्जांपल ये हो सकती है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से हमने अराउंड 1000 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी अपने इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, विच मीन्स कि अगर उसको कम करना है तो हमें सिर्फ सोलर पैनल्स या उस पर नहीं जाना होगा, बट साथ साथ दूसरी चीज़ों को करना होगा, जैसे प्लांटेशन, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने इन्वायरमेंट से कम कर सकें। सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट, बिकॉज हमें हर तरह से इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश अब करनी होगी। So with this in mind, let's go to our scoreboard. And we see a few changes in top 5 now. Hasnan is on the top. Ali Salman is on second में। Ali Salman को लग रहा है वो consistently second पर ही है, which is great कि आप एक जगह पहुंचे consistently उसको maintain करो, तो which is again requires effort, but I'm sure Ali Salman can climb above him now and maybe for ज़ेब अगर तुम देखो तो बहुत कम difference है। Hasnan is at 8,353 points and Ali Salman is at 8,348. So सिर्फ 5 points का फर्क है। Amazing, amazing. और कुछ seconds का difference है। बिल्कुल। Ali Salman, you still have a chance. Yes. You can, Hasnan, you're doing a great job. Good job. Yes, for securing your first position. And then Rehana, Shagufta and Ramin, good job, guys. You're very close to being on the top. All right, so let's go to our next question. The most abundant gas on the Earth's atmosphere is red, oxygen, blue, carbon dioxide, yellow, nitrogen, and green, hydrogen. हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी एयर के अंदर कौन सी गैस आपको लगता है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद है? ऑप्शंस बड़े इंटरेस्टिंग है और लग रहा है सारी ही मैं अगर प्रिपरेशन नहीं की होती तो मुझे लगता है मैं सारों को ही सिलेक्ट कर रहा होता, क्योंकि सब है ना। यस, बिकॉज़ दे ऑल दीस गैसेस एग्जिस्ट इन आवर एयर, लेकिन कौन सी सबसे ज्यादा है, ये ट्रिक है। हमारे पास 23 seconds रिमेनिंग है।
बट आई एम श्योर हमारे पार्टिसिपेंट्स मुझसे ज्यादा स्मार्ट है कि उन्होंने बहुत पहले जवाब दे दिया। बिल्कुल, ऑलमोस्ट सबने ही दे दिया है, कुछ ही रह गए हैं। We have 6 seconds remaining now. And the time is up. The correct answer is nitrogen, जो कि 225 participants ने सही दिया है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन भी हो सकता है, बट इट इज नाइट्रोजन। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ बताती चलूं, नाइट्रोजन इज 78% ऑफ आवर एयर। 78% ऑफ आवर एयर इज नाइट्रोजन गैस। इंटरेस्टिंग, राइट? एंड ये इसलिए इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है बिकॉज इट इज द मोस्ट वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर फूड प्रोडक्शन। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स सिर्फ नाइट्रोजन पे सर्वाइव करते हैं और सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से सर्वाइव करते हैं। चलते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड। ओके, अली सलमान इज ऑन टॉप नाउ। मेरी एडवाइस काम आ गई अली सलमान के लिए। सो अली सलमान हैज 9324 पॉइंट्स। शगुफ्ता फ्रॉम पेशावर इज अ न्यू कैंडिडेट जो अब ऊपर आ गई हैं with 9160 points. Ramin, Aisha and another Aisha from Karachi, they're all in top 5. Excellent. चलते हैं next question की तरफ। Yes, हमारा next question जो है अब हमारी स्क्रीन पर होगा। We're halfway through guys. Which of the following energy sources use fossil fuels? इनमें से कौन सी एलिमेंट है जो fossil fuel use करता है? Option red is nuclear plants, option blue is coal plants, option yellow is solar panels, option green is wind turbines. Which of the following energy sources use fossil fuels? कौन सी इनमें से कंपोनेंट fossil fuel को यूज करता है? एंड ऑप्शंस जो है वो आपके सामने है। ऑप्शन रेड इज न्यूक्लियर प्लांट्स, ऑप्शन ब्लू इज कोल प्लांट्स, ऑप्शन येलो इज सोलर पैनल्स एंड ऑप्शन ग्रीन इज विंड टर्बाइन्स। The excitement is increasing because we are halfway through, which means हमारा almost आधा quiz हो चुका है and आधा रहता है, which means कि अब जो है final हमारे पास आने वाले हैं। हम predictions कर सकते हैं कि शायद कौन winner होगा हमारा आज के काउंट का, हम शायद कर सकते हैं, but again I think ये तो हम last question तक भी predict नहीं कर सकते। So शायद हो सकता है कि नीचे वाले लोग आप वापस ऊपर भी आ सकते हैं। Alright, the correct answer is coal plants, which means your coal plants है वो fossil fuels का part है। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर मैं आपको बताते चलूं तो फॉसिल जो है वो दीज आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे अर्थ के सरफेस के अंडरनीथ बरीड है फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, और उनमें से जब फ्यूल को बनाया जाता है सो दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। जब फॉसिल फ्यूल से एनर्जी निकलती है सो बहुत सारी गैसेस और फ्यूम्स निकलती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट से इतनी फ्रेंडली नहीं है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स पे जो रिलाय करती हैं sources वो environment के लिए बुरी हैं। So with this in mind, let's go to our scoreboard. Alright, so I think you were right कि शायद अब tables change होते जाएंगे और हमें नहीं पता कि final winner भी कौन होगा, right? So हम देख सकते हैं कि रामीन अब top पर आ चुका है और रामीन के points है 1046, and then we have on second we have Aisha, and on third we have Aisha, and then Aliyan and Ali Salman. So guys, make sure you're giving your best ताकि आपको मैं इस टॉप 5 की लिस्ट में देखूं, जो अभी फिल वक्त मौजूद नहीं भी है। आई होप कि वो भी इस लिस्ट में जरूर आएंगे। So let's go to our next question. How does the greenhouse effect influence the climate on the earth? Red, it prevents the earth from getting too cold. Blue, it prevents the earth from getting too hot. Yellow, it traps the heat from the sun. And green, it traps the light from the moon. How does the greenhouse effect influence the climate on the earth? किस तरीके से greenhouse gases जो है वो हमारे earth को, हमारे climate को affect कर रही हैं? आपके पास 4 options हैं, आपको जो भी सही लग रहा है please click on that color. It prevents the earth from getting too cold. Blue, it prevents the earth from getting too hot. Yellow, it traps heat from the sun. And green, it traps the light from the moon. Okay, and we have 14 seconds remaining. Let's see who knows more about greenhouse gases. देखते हैं कि कौन greenhouse gases के बारे में ज़्यादा जानता है। बिल्कुल। And the time is up.
The correct answer are 2. जिसने रेड क्लिक किया है वो भी सही है और जिसने येलो किया है वो भी सही है. It prevents the earth from getting too cold and it traps the heat from the sun. ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताती चलूं, जैसे कि ज़ेब ने आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बुरा है. वो इसलिए बुरा है क्योंकि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं. और ग्रीन हाउस गैसेस आर लाइक अ ब्लैंकेट जो कि हमारे प्लैनेट के अर्थ के अराउंड क्रिएट हो जाता है, एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस. ये इसलिए बुरा है क्योंकि इसकी वजह से अर्थ गेट्स वार्मर एंड वार्मर एवरी डे. हम देखते हैं कि हर साल जो है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स की तरफ हम जा रहे हैं, गर्मियां ज्यादा होती जाती हैं, ठंड ज्यादा होती जाती है, वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है. सो वी नीड टू टेक स्टेप्स जहां हम फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन सबसे कम कर सकें. बिल्कुल. चलते हैं स्कोरबोर्ड की तरफ और हम देखते हैं कि रामीन इज स्टिल ऑन टॉप विद 11,000 पॉइंट्स. एक्सीलेंट रामीन. Aisha from Karachi is at 10,644 points. Aisha from Karachi is another Aisha from Karachi is at 10,430 points. And then we have Faiza, who I think is the new candidate in the top 5. इसको अभी हम पहली दफा top 5 में देख रहे हैं. Faiza from Karachi, good job Faiza. And then Yarish also, ये भी पहली दफा top 5 में हमें नजर आए. Excellent. चलते हैं next question की तरफ. बिल्कुल. So our next question is, which of the following is recyclable material? ये एक general question है. Option red is food waste, option blue is glass, option yellow is plastic, and option green is ceramics. So इन सारे options में से कौन सा material recyclable है? Food waste, option red, option blue is glass, option yellow is plastic, and option green is ceramics. और 30 seconds भी नहीं हुए और हम देख रहे हैं majority ने जवाब देना शुरू कर दिया. But Zip, this is a tough one. Yeah. Interesting. और देखते हैं कि हमारे participants कितने smart हैं. क्योंकि मुझे तो इसमें से 2 options recyclable लग रहे हैं. Yes, but यहाँ पर है कि most recyclable है, so जिसको आप 100% कर सकते हो. So वो कौन सा option है यहाँ पर? जिसको देखते ही साथ कहते हो कि yes, this is recyclable. Okay, and we are at 9 seconds. 9 seconds. और जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं. Kahoot पिन हमारी 2409425 है. All right, the correct answer is glass. And unfortunately, कम लोगों ने जवाब दिया है, but काफी लोगों ने प्लास्टिक को सेलेक्ट किया. Plastic is not 100% recyclable, and in fact, plastic is one of the most elements found in our environment, which is least recyclable. So unfortunately, plastic is not the correct answer, but glass, yes. ग्लास जो है वो 100% रिसाइक्लेबल है. यानी कि अगर ग्लास को आप डिफरेंट फॉर्म में लाना चाहते हो, सो यू कैन मेल्ट इट एंड गिव इट अ न्यू फॉर्म. अगर वो टूट भी जाता है एंड तो आप उसको रिसाइकल कर सकते हो. इट डजंट लूज इट्स क्वालिटी एंड इट्स प्योरिटी एज वेल, व्हिच मींस कि आप ग्लास को रिसाइकल करते रहो और उसकी जो प्योरिटी है वो कम नहीं होती. सो अमेजिंग. सो ग्लास, आई थिंक ये इंफॉर्मेशन हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं कि आउट ऑफ दीज ऑप्शंस ग्लास इज द मोस्ट रिसाइक्लेबल हियर. All right, let's see our scoreboard. ग्लास रिसाइक्लेबल अगर हम उसके बारे में बात करें, सिर्फ थोड़ी सी रिसाइक्लेबल वो चीज होती है जिसको आप रीयूज कर सकते हैं. ठीक है. एंड वी कैन सी रामीन इज ऑन टॉप स्टिल. And then we have Raila. Raila is again a new participant in top 5. Ramin is on top with 11,968 points. Excellent, Ramin. Amazing. चलते हैं next question की तरफ. हम अपने 14th question की तरफ जा रहे हैं. And the next question is, what is the main source of carbon dioxide emissions? What is the main source of carbon dioxide emissions? Red, burning fossil fuels like coal, natural gas, and oil. Blue, cooking food. Yellow, breathing. And green, using fertilizers. कौन सी ऐसी चीज है इन चारों में से जिससे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में प्रोड्यूस होती है? रेड, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. ब्लू, कुकिंग फूड. येलो, ब्रीदिंग. एंड ग्रीन, यूजिंग फर्टिलाइजर्स. वी हैव 27 seconds रिमेनिंग और काफी लोगों ने जवाब दे दिया है. ऑलमोस्ट 450 लोगों ने जवाब दे दिया है. हमारे स्कोर्स 1000 में चल रहे हैं, तो हमारे मुंह पे 1000 आ रहा है इस वक्त. All right, last 10 seconds.
जिन्होंने जवाब नहीं दिया है वो अब भी जवाब दे सकते हैं। And the time is up. बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, almost 400 लोगों ने, 399 participants have given the right answer. Excellent, which is burning fossil fuels like coal, natural gas and oil. ये इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो इन तमाम चीज़ों से प्रोड्यूस होती है, खाना पकाने से भी, सांस लेने से भी, यूजिंग फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वो तब प्रोड्यूस होती है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि फॉसिल फ्यूल्स कितने बुरे हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द गैसेज जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने में, जो ब्लैंकेट की हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, वो क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। चलते हैं स्कोरबोर्ड की तरफ, देखते हैं कौन आगे बढ़ा है। हमारे पास excellent, Ramin is still on top with 12,939 points. Buck up everybody else. जो लोग पहले आगे थे उनको क्या हो गया? Come on. Raila is at second, Aisha from Karachi third, Aisha from Karachi again on fourth, and then Faiza from Karachi with 11,220 points is on fifth. चलते हैं next question की तरफ. Yes, our next question is, when plastic is left in the environment, आपको ये sentence complete करना होगा. So option red is, it eventually mixes with the earth because it's a biodegradable material. Option blue is, it never fully goes away, it just breaks into little plastic. Option yellow, causes no harm to environment. Option green is, becomes usable after few years because all plastic is recycled. So आपको क्या लगता है कि जब प्लास्टिक को environment में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? When plastic is left in environment, it, and then जो आप option आपको correct लगता है उसको आप select करेंगे. So option red is, eventually mixes with the earth because it's a biodegradable material. Option blue is, never goes away, it just breaks into little plastic. Option yellow is, causes no harm to environment. And option green is, becomes usable after few years. All plastic is recycled. So जो आपको लगता है option सही है उस color को आप अपने devices पर select करेंगे. And your time's up. And majority ने सही जवाब दिया, which is, I'm glad के is the correct answer, कि जब प्लास्टिक को environment में छोड़ दिया जाता है, it never fully goes away. यानी कि अगर हम प्लास्टिक को अपने environment में छोड़ते हैं, so even though अगर वो छोटे छोटे pieces में चली जाती है जिसको हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, वो फिर भी हमारे environment में रहती है. यानी कि अब तक over the century or years, 100 years, जितनी भी हमने प्लास्टिक प्रोड्यूस की है वो हमारे एनवायरनमेंट में अब तक मौजूद है. और एक अलार्मिंग सिचुएशन जो अब हमारे सामने आती है वो ये है कि अब ह्यूमन बॉडी से भी कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक जो है वो मिलना शुरू है. यानी कि जो हम फिश यूज कर रहे हैं या फिश ईट कर रहे हैं उसके थ्रू या फूड पैकेजिंग के थ्रू जो प्लास्टिक कभी कभार हम कंज्यूम कर लेते हैं, सो अब हमारी बॉडी में भी है. सो यानी कि कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ भी इसकी वजह से रिस्क पर है. सो एनवायरनमेंट की हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ का भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की हेल्थ अगर हम लूज कर जाएंगे, सो ह्यूमन हेल्थ विल बी आल्सो एट रिस्क. सो अकॉर्डिंग टू द करंट प्रोग्नोसिस, एनवायरनमेंट के अंदर जो प्लास्टिक यूज हो रही है वो अब भी बहुत लेवल्स पे मौजूद है. So with this in mind, let's go to our to our scoreboard first. So here are the rankings. First पे अभी भी रामीन मौजूद है, then Raila, then Aisha, and then Fiza and Ali Salman. So Ali Salman is back in top 5, which is quite fascinating. And Faiza, I can see, is on top 4. So amazing responses, guys. Or up jo hai, with this in mind, we can go to our next question. But I'm amazed that Ramin has managed to stay on top. Yes. देखते हैं next question क्या है. What are endangered species? Red, type of organisms that are at risk of extinction by human practices. Blue, species found on land and in the ocean. Yellow, species that are threatened by the predator. And green, all of the above. Endangered species क्या है? वो कौन से species हैं जो endangered हैं? वो कौन से species होते हैं जो endangered होते हैं? Red, type of organisms that are at risk because of human practices. Blue, species found on land and in the ocean. Yellow, species that are threatened by the predator. And green, all of the above. इसमें एक से ज़्यादा सही जवाब जो है वो हमें लग सकता है कि होंगे, लेकिन है एक ही जवाब सही. But options close हैं काफ़ी. And we have 10 seconds remaining.
जो भी आपको सही आंसर लगता है, प्लीज क्लिक ऑन दैट कलर. And we have 3 seconds remaining and the time for this question is up. ज्यादातर लोगों ने 265 participants ने आंसर किया है red, which is the right answer. Type of organisms that are at risk because of at risk of extinction by human practices. बहुत सारे लोगों ने green भी किया है, which is not the right answer, and कुछ लोगों ने blue और yellow भी किया है. Basically जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन होते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होते हैं जो बहुत लार्ज नंबर में जिनकी तादाद हमारी दुनिया से कम होती जा रही है, और ये मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमंस की इल प्रैक्टिसेस हैं कुछ, जैसे कि हंटिंग, फिशिंग, डिफॉरेस्टेशन वगैरह. इनकी वजह से हम जानवरों को, उनके हैबिटेट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं. थोड़े से फैक्ट्स में अगर आपको बताती चलूं तो इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीशी है, लाइक ऑन टॉप इज द जैवान राइनो, एंड सेकंड पे हमारे पास आते हैं माउंटेन गोरिल्लाज. जैवान राइनोज जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ ऑलमोस्ट 60 to 65 की तादाद में मौजूद हैं, विच इज वेरी वेरी अलार्मिंग. ठीक है, बिकॉज इफ दैट नंबर वी लूज दैट नंबर देन वी डोंट हैव जैवान राइनोज एट ऑल. बिल्कुल. और आई थिंक ये ह्यूमन प्रैक्टिसेस की वजह से, क्योंकि एक तो नेचुरल साइकिल भी है कि जो प्रेडेटर है वो उसको अपने स्पीशी को खाएगा या जो उसका प्री होगा उसको खाएगा. सो वो जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो तो हमेशा से चला आ रहा है और हम इंटरडिपेंडेंट है उस वजह से. बट जो एक्सटिंक्शन जो मेजर हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिसेस से हो रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है. चलते हैं स्कोरबोर्ड की तरफ, देखते हैं कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे रह गया. एंड रामीन इज स्टिल ऑन टॉप, अमेजिंग, विद 14,789 पॉइंट्स. राइला अब सेकंड पे आ चुकी हैं. आयशा इज ऑन थर्ड. अली सलमान इज बैक इन द गेम, ही इज बैक इन टॉप 5, एंड यारिश इज अगेन ऑन द 5th नंबर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बिल्कुल. All right, our next question is, which country produces the most energy through the wind? Option red is New Zealand, option blue is Poland, option yellow is Netherlands, option green is Norway. Which country produces the most energy through the wind? Option red is New Zealand, option blue is Poland, option yellow is Netherlands, and option green is Norway. This is an interesting one, right? Yes, yes, बिल्कुल. और कहीं ना कहीं हमें बताता है कि शायद किस कंट्री ने विंड टर्बाइन के थ्रू यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के थ्रू अपनी जो कंजम्पशन या अपनी प्रोडक्शन जो है उसको सेलेक्ट किया है. 15 सेकंड्स रहते हैं और 400 लोगों ने जवाब दे दिए. So the question is, which country produces the most energy through the wind? टाइम अप होने वाला है बहुत जल्द. Alright, so I think काफी लोगों ने बैलेंस दिया, हर कंट्री को सेलेक्ट कर रहे थे, बट द करेक्ट आंसर इज नेदरलैंड, जिसे लैंड ऑफ विंड टर्बाइंस भी कहा जाता है. सो वहां पर आपको बहुत से विंड टर्बाइंस मिलेंगे जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो दिस इज द राइट आंसर. ऑलराइट, वी कैन सी आवर स्कोरबोर्ड नाउ. Alright, so Ramin is again on the top with Raila on second, Aisha is on third, Aisha again is on fourth, and then Ali Salman is on 5 or 5th. हमारे पास 3 और सवाल रह गए हैं guys, buck up, and आपके पास ऑप्शन है, सॉरी 3 नहीं 4 सवाल और रह गए हैं हमारे पास. We are now moving towards our 18th question, and let's see the question. Which of the following light bulb type uses the least energy and therefore results in fewer greenhouse gas emissions? Red, incandescent; blue, compact fluorescent; yellow, halogen; and green, none of the above. इन चारों बल्ब टाइप्स में से कौन सा ऐसा बल्ब है जो सबसे कम एनर्जी रिक्वायर करता है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी? हमारे पास ऑप्शंस हैं रेड, incandescent bulbs. Okay. We already have the right answer because everybody answered. Yes, the correct answer is compact fluorescent. ज़्यादातर लोगों ने 72 participants ने सही जवाब दिया है, which means compact fluorescent. ये basically अगर मैं आसान ज़बान में आपको बताऊँ तो ये वो energy savers होते हैं जिनको हम बहुत commonly हमारी life में use कर रहे होते हैं, हमारे घरों में, balconies में, इधर उधर. And ये इसलिए बहुत effective है environment के लिए क्योंकि ये बहुत कम amount में energy ले रहे होते हैं. They consume very less energy to produce the light. And therefore ये greenhouse gas
emissions में जो है ना वो एक बहुत less greenhouse gas emissions produce कर रहे होते हैं, and they're very good for the environment. चलते हैं scoreboard की तरफ और देखते हैं हमारे पास गेम में इस वक्त still Ramin is on top with 15,764 points. I think points में इतना फर्क नहीं आया है, but Ramin is still on top. Raila is on second, Ali Salman, and then Aisha. Both the Aishas are back in the game. चलते हैं next question की तरफ. All right, next question जो हमारी screen पर है, what is the most common type of waste that litters our ocean? Option red is bags, option blue is plastic and styrofoam containers, option yellow is cigarette butts, and option green is food waste. यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जो करेक्ट हैं, यानी मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, तो आप उनमें से कोई भी सेलेक्ट करेंगे और अगर वो सही हुआ तो आपको अवार्ड पॉइंट मिले जाएंगे. Question is, what is the most common type of waste that litters our oceans? हमारे oceans में सबसे most common कौन सा type है जो कि हमारे oceans में पाया जाता है? Option red is bags, option blue is plastics and styrofoam containers, option C is cigarette और option yellow is cigarette, and option green is food waste. आपके पास 15 seconds अब भी मौजूद हैं अपने आंसर शेयर करने के लिए हमारे साथ. I think this is again a confusing one. बिल्कुल बहुत ट्रिकी है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और उसके साथ, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द आंसर, बट बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया विच इज प्लास्टिक एंड स्टाइरोफोम कंटेनर, विच इज ट्रू, एज वेल एज सिगरेट बट्स आर अनफॉर्चुनेटली आल्सो ट्रू, कि जो कि आप करेक्ट आंसर है. और कहीं ना कहीं जो मैं बात करता हूँ कि हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट की हेल्थ भी कनेक्टेड, सो अगेन सिगरेट के अपने हैजर्ड्स भी हैं, देन एनवायरनमेंट को भी वो कहीं ना कहीं डैमेज करा है. बट प्लास्टिक की जहाँ बात आती है तो अगेन ओशंस के अंदर जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट हम देखते हैं, जो हमने आज के हमारे स्लाइड शो में भी देखा, कहीं ना कहीं वीडियो में भी हमें बताया जा रहा था कि वो ये है कि प्लास्टिक इज मोस्ट कॉमन सब्सटेंस फाउंड इन ओशन. और अगर जिस प्रैक्टिस के साथ, जिस कॉमन तरीके से हम यूज करें और एनवायरनमेंट में इसको छोड़ रहे हैं या ओशंस में छोड़ रहे हैं, बिकॉज अगर आप उसको लैंड पे भी छोड़ रहे हो वो कहीं ना कहीं एयर के थ्रू ट्रेवल करके ओशंस तक चला जाता है, पानी में चला जाता है. सो अगर इसी लेवल पे हमने यूज किया तो 2050 तक साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर इसी कंजम्पशन के साथ हुआ तो फिशेस के साथ साथ प्लास्टिक जो है उनसे भी ज्यादा मौजूद होगा हमारे ओशन में. आई थिंक ज़ेब ये प्रॉब्लम तो है कि प्लास्टिक और स्टाइरोफोम इज बैड फॉर आवर ओशन और हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको हम अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से देखें, सो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स. ठीक है, वी नीड टू थिंक ऑफ द अल्टरनेटिव्स कि अगर हम प्लास्टिक या स्टाइरोफोम नहीं यूज़ कर रहे तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं. मे बी वी कैन यूज़ पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स, छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस हम करके जो है वो एक बड़े लेवल पर इम्पैक्ट ला सकते हैं. बिल्कुल इंडिविजुअली ग्लोबल तक जाएगा, सो उसमें हम सबको किरदार अपनाना है. Alright, देखते हैं स्कोरबोर्ड. बिल्कुल स्कोरबोर्ड की तरफ चलते हैं. और अगेन ऑन टॉप इज रामीन फ्रॉम कराची, देन रायला, फॉलोड बाय अली सलमान, आयशा एंड यारिश. तो गुड जॉब गाइस, और लेट्स सी कि हमारे फिर विनर्स कौन होते हैं, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चंस रह गए और हमारे पास विनर्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, एंड द क्वेश्चन इज अबाउट हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ स्टाइरोफोम कप टू डीकंपोज. स्टाइरोफोम कप को डीकंपोज होने में पूरी तरह से कितना टाइम लग जाता है. रेड 10 years, ब्लू 2 months, येलो 400 years एंड ग्रीन 150 years. स्टाइरोफोम कप वो व्हाइट वाला कप होता है जिसमें हम चाय कॉफी पीते हैं, बहुत आम तौर पर हम उनको इस्तेमाल करते हैं. वो कितना टाइम लेता है डीकंपोज होने में, यानी हमारे एनवायरनमेंट से पूरी तरह से खत्म होने में. एंड एवरीबडी हैज आंसर्ड. द करेक्ट आंसर इज 400 years. 98 लोगों ने सही जवाब दिया है. और वैसे तो 400 years है, बट साइंटिस्ट्स आर स्टिल नॉट श्योर ऑफ इट. इस पे फर्दर रिसर्च जारी है और कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इवन 400 years में भी ये पूरी तरह डीकंपोज नहीं होता, विच मीन्स कि ये शायद कभी भी फुली हमारे प्लैनेट से नहीं हटती हैं चीजें. अब आप देख लें कि किस हद तक हैजर्डस हैं ये हमारे प्लैनेट के लिए. चलते हैं स्कोरबोर्ड की तरफ. Ramin has constantly stayed on top and he has made 16,735 points. Amazing. Raila is on second. Ali Salman is on third. Ali Salman has picked up his game. Good job, Ali Salman. Mariam and Sanobar are on fourth and fifth. So Sanobar, very good. You're in top 5 now. Amazing. And guys, we are seconds before we announce our winners for today's trivia quiz, which means कि हमारा last question होगा and that will be the decider
कि कौन हमारे आज के Kahoot quiz को win कर रहा है. Right, so with this in mind, before wasting any time, let's go to our final question on screen now. Our final question for today is: marine animals are impacted by ocean plastic because option red is it is full of toxins, option blue is it traps them and when they eat it can starve them, option green is it kills their food, meaning they are left with nothing to eat, and option green is all of the above. So the question is, the final question for today's Kahoot quiz is: marine animals are impacted by ocean plastic because option red is it is full of toxins, option blue is it traps them and when they eat it can starve them, option yellow is it kills their food, meaning they are left with nothing to eat, and option green is all of the above. 400 लोगों ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है एंड वी आर सेकंड्स बिफोर कि जब ये टाइम खत्म होगा और हमारे पास फाइनल हमारा विनर जो है वो आज का हमारे सामने होगा. एंड आई एम super excited to announce our winners. All right, so the correct answer is all of the above. यानी कि जब प्लास्टिक एनवायरनमेंट में यानी पर्टिकुलरली ओशंस में एंटर होता है तो वो हर तरह से फिश को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा होता है. या तो फिश उनको खा लेती हैं ये समझ के, क्योंकि काफ़ी प्लास्टिक को वो जेली फिश समझ के खा लेती हैं, एंड देन जब उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होता है तो वो फिर उसको ट्रैप कर देता है एंड देन वो कुछ और नहीं खा सकती हैं और वो सर्वाइव नहीं करती हैं. या तो हम ये देखते हैं कि उनकी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि अगर दूसरी फिश मर जाती है बिकॉज ऑफ प्लास्टिक सो वो उनको खा नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं पूरी इकोलॉजी विद इन द ओशन डिस्टर्ब हो जाती है. सो आई थिंक all of the above is the correct answer. All right, with this in mind, I'm sure everyone is excited to find our winner for today's Kahoot quiz. And स्कोरबोर्ड देखें हम साथ में मिलकर. चलें 3, 2, 1. Here we go. So on the podium, we're gonna celebrate all the winners. On position 3 is Rameen. On position 2 is Ali Salman. And on position 1 is Raila. So tables have turned. Raila is on top and with Ali Salman on second and Rameen is on third. I think ये लास्ट क्वेश्चन ने हमारी गेम जो है उसको बिल्कुल चेंज कर पासा पलट दिया है. बिल्कुल. आई थिंक जो फर्स्ट का हमारे पास नजर आ रहे थे वो अब थर्ड पे है, बट डू नॉट वरी गाइस, यू आर विनर, स्टिल अ विनर रामीन. सो गुड जॉब. एंड आई एम श्योर जिन्होंने बाकी ने पार्टिसिपेट किया जो इस वक्त मौजूद नहीं है बट इस टॉप 3 में मौजूद नहीं है, बट उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला. सो वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू. एंड विद दिस इन माइंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा तीनों को, अली सलमान को, रामीन को और हमारे साथ तीसरे पे कौन थे? राइला. यस, सो राइला से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है अपने कैमरास ऑन करें ताकि हम आपको जूम पर स्पॉटलाइट कर सकें और आपकी इस अचीवमेंट को साथ में सेलिब्रेट कर सकें. We have them on video. We have Rameen. Hello Rameen. Good job Rameen. Good job. We are proud of you. And we have other winners as well on the video. We are gonna start spotlighting them. All right, Raila on first. Yes, Raila is on top. So Raila is on our screen. Good job Raila, we're proud of you. Amazing job, amazing job. And then हमारे सामने amazing Ali Salman भी है जो अभी हमें नजर आ रहा है. So guys, so happy to see you and good job. आपने बहुत तगड़ा खेला, बहुत अच्छा खेला. And we cannot be like हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं आपके साथ. बिल्कुल. आप लोगों के प्राइजेस आप लोगों तक डिलीवर कर दिए जाएंगे थ्रू मेल, थ्रू पोस्ट. आप लोग प्लीज अपने फोन नंबर्स, अपना सिटी का नाम और अपना नाम हमें चैट पर भेज दें. ऑल द 3 विनर्स, प्लीज डू दैट. सो आप अगर चैट पर जाएंगे वहां पर आपके पास होस्ट को मैसेज करने का ऑप्शन होगा. वहां पर जाके अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करें और साथ साथ अपने नेम, फुल नेम एंड आपकी सिटी करें. एंड देन जो हमने एक्साइटिंग प्राइजेस हैं वो आप तक पहुंच रही होगी कुछ ही नेक्स्ट डेज के अंदर. सो विद दिस इन माइंड, गुड जॉब गाइज एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू. अमेजिंग जॉब. ओके, अगर आप अपने कैमरास बंद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. हमने ये क्विज बहुत एंजॉय किया, मैंने भी एंड ज़ेब, आई एम श्योर तुमने भी बहुत एंजॉय किया एंड आई एम श्योर हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा.
जो आज का क्विज नहीं जीत पाए, इट्स ओके, वी हैव स्टिल लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, हमने बहुत सारी आज नई चीजें सीखी हैं एंड इंशाल्लाह देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। लेकिन आज का जो हमारा क्विज था वो सिर्फ एक शुरुआत थी, इट वाज जस्ट द बिगिनिंग। असल जो है अब हमारा मरहला शुरू होता है जब हमें इस लर्निंग को, इस अवेयरनेस को जो हमने आज क्रिएट किया उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी जिंदगियों के अंदर। वी हैव टू मेक वाइज चॉइसेस, हमें वाइज चॉइसेस की तरफ जाना है, बेटर चॉइसेस की तरफ जाना है, और ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि कम्युनल लेवल पर, एज अ कम्युनिटी। आज हम ये ग्लोबल स्माइली डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज एज अ कम्युनिटी हम ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट वी विल मेक बेटर चॉइसेस इन आवर लाइफ। इसी के साथ आपके पास चैट पर एक पैडलेट का लिंक शेयर किया जा रहा है। व्हाट यू हैव टू डू इज, हम एक प्लेज के साथ एंड करेंगे हमारा आज का सेशन। हम एक अहद करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी चॉइसेस को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास पैडलेट की वॉल पर एक स्टेटमेंट आ रहा होगा, आई वॉन्ट टू सी अ वर्ल्ड वेयर आई एम डूइंग और आई वॉन्ट अ वर्ल्ड वेयर आई एम नॉट डूइंग। आप किस तरीके का फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं इस दुनिया के लिए या होप करते हैं इस दुनिया के लिए? यू हैव टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट बाय राइटिंग आई वॉन्ट अ वर्ल्ड वेयर आई एम डूइंग और आई वॉन्ट अ वर्ल्ड वेयर आई एम नॉट डूइंग। कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, नई सीखना चाहेंगे, या कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जिनको आप खत्म करना चाहेंगे? प्लीज मेक दीज promises with us, share your views with us on the Padlet wall. Thank you for joining us today. Thank you very much. और बिल्कुल आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम आखिर जो हमारा स्टार्ट है वो जो है वो इसी तरह से करें कि हम अपने प्लेजेस जो हैं वो आप तक हम एक दूसरे के साथ शेयर करें कि हम क्या चाहते हैं। Sorry, I can't read it. Please write your contact numbers. ओके रामीन एंड राइला, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम तक नहीं पहुंची है, सो प्लीज बिफोर यू लीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें, होस्ट के साथ शेयर करें, जो ताकि हमारे पास आए और हम आप तक प्राइजेस पहुंचा सकें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे विनर्स हैं वो अपने नंबर्स हमारे साथ शेयर करें। आप जूम चैट पे अपनी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्लीज भेजें, अपना सिटी बताएं और अपना फोन नंबर जरूर दें सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू, ताकि हम आप तक आपकी गिफ्ट्स पहुंचा सकें। बिल्कुल, और हम इस मूवमेंट नोट पर एंड करेंगे कि जो भी लर्निंग्स हम अपने साथ ले जा रहे हैं, इवन दो कहूट क्विज के अंदर कुछ विनर्स रहे, कुछ ने नहीं विन किया, बट जो लर्निंग हम अपने साथ लेके जा रहे हैं दिस विल रिमेन विद अस फॉर द लाइफ टाइम, और हम उस पर एक्ट करना शुरू करेंगे। सो लर्निंग टाइम के साथ अब एक्शन टाइम भी स्टार्ट हुआ है, सो मेक श्योर करना है कि हम ये सारी चीजें करें कि आई वॉन्ट अ वर्ल्ड वेयर आई एम डूइंग एंड आई वॉन्ट अ वर्ल्ड वेयर आई एम नॉट डूइंग। राइला, आपका नंबर प्लीज आप हमारे साथ शेयर कर दें ताकि हम आपकी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करें और आप तक जो प्राइस है वो पहुंचा सके। We still haven't received your number, राइला, हमारे पास अब तक आपका नंबर नहीं आया है। प्लीज आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करें चैट पर, डायरेक्ट मैसेज कर दें जूम की चैट पर। Let's see if we have Raila's number yet. Amazing. So responses are my Padlet पे. I want to see a world which is free of pollution. Yes, we want to see a world which is free of pollution. बिल्कुल। I want a world which is free of pollution. Okay. And what else we have? I want a world where I am not cutting trees. Yes, very important. बहुत ज़रूरी है ये कि हम trees को ना, और अगर हम cut कर रहे हैं, sorry ज़ेब, अगर हम trees को cut कर रहे हैं तो हमें plant भी करने हैं. If we are taking something from the nature, we have to give back to the nature. That's the law. Definitely. और I think मैं एक और comment पढ़ रहा था, किसी ने Padlet पर लिखा है कि I would not throw plastic in the air. So राइला, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करें, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम तक नहीं पहुंची है। सर मैंने आपको भेजा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स Okay, हमारे I तक think शेयर we करें। have Raila's number now. Excellent, Raila. Thank you very much. We have Raila's number. आप प्लीज Padlet पर अपने व्यूज शेयर करते जाएं हमारे साथ. We will be reading them offline. And on that note, thank you very much again. Thank you for joining us. And this is the end of our quiz. Yes, और आई थिंक जो आज लेसन में साथ में लेकर जा रहा हूँ वो यही है कि हमें नेचर के साथ बैलेंस में रहना है, और
At the end, we would like to thanks all our participants जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, आज हमारे साथ कहूट क्विज खेला, और साथ ही साथ हम तमाम इंस्टीट्यूशंस के शुक्र अदा करते हैं, जैसे कि आगा खान एजुकेशन बोर्ड फॉर पाकिस्तान एंड आगा खान यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड फॉर पाकिस्तान, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस और बाकी तमाम जमाती इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने हम इस प्रोग्राम को पॉसिबल बनाया, हमारे साथ रहे और इस विजन के साथ चले विद ऑल द लीडरशिप एज वेल, जिस लीडरशिप ने हमें इंकरेज किया कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया जाए. सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. आई होप यू ऑल लर्न something from today's program, and हम सब कुछ ना कुछ learning के साथ, lesson के साथ आज इस program से जा रहे. So with all this, thank you and Allah Hafiz. Allah Hafiz.